Yes, hello children. We are back again with the new lesson of social studies, that is lesson number 5, House to Live in. So our 4 lessons are completed, and I hope the notes which I have given you of the last lesson you people have written in your classworks as well as in your textbook also. So not wasting our time, let us start our lesson, that is house to live in. So this lesson is all about the types of houses we are living in. So there are different types of houses and there are advantages of the houses also. House does not only gives us a roof to live, but it also protects us from sun, from rain, from animals, from thief. None of the animals can enter in our houses. Okay, so let us elaborate more what does this lesson is all about. So our house protects us from the heat of the sun, cold, rain and storm. We keep all our things in our house. Our family lives together in a house. We call it our home. So our house protects us from, as I told you, it protects us from the sun, cold, rain as well as storm. So not only that, we also keep many things in our houses, right? From a small things to a big things. All the items we keep in our houses. If you want to sleep also, if you want to sit also, it's not like that every time you can sit on the road, you can sleep on the road. No. So for that thing, we have our houses. So our whole family lives together in a house, that is called as what? Home. जैसे घर कहा जाता है पूरी family जब एक साथ घर में रहती है. So now types of houses. There are many types of houses. First one is a permanent houses, temporary houses and movable houses. Let us see what does it mean. Houses are of 3 types: permanent, temporary and movable. How many types? 3 types: permanent, temporary and movable. So permanent houses are made up of bricks, stones and cement. They last very long. So the houses which we are living in, this type of house is called as what? Permanent house. आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके उस घर को क्या कहा जाता है? उसे permanent house कहा जाता है. So these houses are made up of bricks, stones and cement. तो ये लोग long lasting हैं. In the sense, चाहे तेज बारिश हो या storm हो या कुछ भी हो, आपका ये घर नहीं टूटेगा. Because they are made in such a way that they are very lasting. Bricks houses are strong than wood or mud. Okay, so अगर कोई घर wood का हो या mud का हो तो वो इतना strong नहीं है जितना strong हमारा ये घर होता है bricks का. So I believe all of you are living in a permanent house. Yes, in the cities everyone are living in a permanent house. All the houses are made up of bricks. In the villages we might can see different types of houses, like the houses are made up of wood or mud. But our house is a permanent one, and yes, it is unbreakable house. Next is what? Temporary houses. So temporary houses are made up of wood, bamboo or mud. They do not last for long. So this type of house you can see over here. Okay, these are what? Temporary houses. ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं. मतलब अगर तेज हवा आ गई, तेज बारिश हो गई तो ये हाउस टूट सकते हैं, या बाढ़ आ गया या तूफान आ गया तो ये टाइप के हाउसेस टूट सकते हैं. एंड इवन इट इज मेड अप ऑफ वुड. अगर किसी ने थोड़ा सा भी आग लगा दी तो ये लकड़ी जल सकती है, राइट? So these are not, they do not last for very long, and these are not permanent houses. It can be destroyed easily. Next is the movable houses. Movable houses are made up of wood or canvas. Some people move from place to place for their work. They make movable houses. So gypsies live in a house always like caravans. A houseboat is a floating house in a lake. Soldiers, scouts and NCC cadets live in canvas tent while camping. So next is what? The movable house. It is a type of house which can be moved from one place to another place. तो यूजुअली पीपल ये टाइप का हाउस क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक एरिया से लेके दूसरे एरिया तक सफ़र करना पड़ता है. स्पेशली ड्यूरिंग द आर्मी मैन जो होते हैं, ओके, नेवी वाले जो फ्लोटिंग बोट्स में रहते हैं. सो दे वर्क इज टोटली एट द शिप, इज टोटली एट द कॉर्नर्स ऑफ द lake or the rivers. So they make houses in that area and they can easily move from one place to another place. So these are made up of wood or canvas. So because of the work they need to move from one place to another place. So gypsies मतलब एक, you can see like this. These are called as what? Gypsies. So gypsies मतलब गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसमें एक नॉर्मल सा बेड है,
एक नॉर्मल सा रूम है एंड अ किचन एंड अ बाथरूम. सो दिस जिप्सीज आर कॉल्ड एज व्हाट caravans. सो इजीली ए पर्सन कैन अपने साथ साथ वो कार में जा सकता है एंड उसके साथ साथ अगर उनको वहाँ पे रेस्ट करनी है कहीं तो वो रूम के अंदर रेस्ट करता है. We normal people, we cannot make these things because our house and our work is totally in this area in our city. But these houses are for those people जिनका शहर से दूर उस एरिया में जॉब हो जहाँ पे वो हमेशा घर नहीं ले सकते, राइट, और उनकी जॉब ट्रांसफर्स होते रहती है. सो ये जॉब और ये टाइप के हाउसेस उन लोगों के लिए है. ये इट इज़ फॉर सोल्जर्स, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट्स. एंड देयर इज़ अ हाउस बोट ऑल्सो, जो लोग मतलब शिप में ट्रैवल करते हैं या जिनको शिप में या पानी के एरिया के आसपास कहीं जॉब है तो उनका हाउस ऐसे बोट के ऊपर होता है. एंड अ टेंट, यूजुअली टेंट इज नॉट अ परमानेंट हाउस, जहाँ पे बैठे वहाँ पे टेंट लगाए एंड अगेन चेंज अ प्लेस एंड अगेन वहाँ पे कहीं और पे टेंट लगा दिए. सो दीज आर दिस टाइप ऑफ हाउसेस. Houses have different shapes of roof. Flat roof are made in a hot dry region. They are made of concrete or stone tiles. Sloping roof are made at a place of heavy rainfall or snow. Sloping roof helps the water or snow to fall off immediately. They are made up of tiles, tins, asbestos and thatch. So houses are of so many types. जो उसका roof होता है, जो उसकी छत होती है, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. Some area will have a flat roof and some area will have a sloping roof. तो फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ बनाने के लिए भी एक उसके पीछे एक कहानी है. कहानी इन द सेंस एक रीजन है कि क्यों फ्लैट रूफ बनाया जाता है एंड क्यों स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है. सो फ्लैट रूफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हॉट ड्राई रीजन के टाइम पे, जो हॉट ड्राई रीजन है या ऐसा क्लाइमेट है, तो वो टाइम पे फ्लैट रूफ अगर बनाएंगे तो कंक्रीट या स्टोन के टाइल से बनाया जाता है. स्लोपिंग रूफ इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एरिया में स्नो होता है या हैवी रेनफॉल, it is made in that area where there is a heavy rainfall and snow, so they'll make a sloping roof because whatever the water or whatever the snow which is falling, immediately it falls off. स्लोपिंग रूफ अगर ऐसा रूफ है तो उन्हें रखने के लिए, उन्हें बैठने के लिए कोई जगह तो नहीं मिलेगी. सो इमीडिएटली वो क्या होता है, वो डायरेक्टली नीचे फॉल हो जाता है. अगर फ्लैट रूफ हो तो पानी और स्नो यहाँ पे जमा हो जाता है. सो अपने घर को उससे बचाने के लिए पीपल विल मेक अ स्लोपिंग रूफ. जो बारिश हो या स्नो हो वो डायरेक्टली नीचे फॉल हो जाता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई फ्यू पीपल मेक स्लोपिंग रूफ. सो दीज स्लोप्स आर मेड अप ऑफ टाइल्स, टिन्स, asbestos and thatch. Okay, so these are different types of sloping roof which are made up of. कोई टाइल्स से बनाते हैं, कोई टिन्स से बनाते हैं, कोई asbestos और कोई thatch से. Okay, so for today children, this much is enough. We have learned about the types of houses. There were two types of houses: permanent house, temporary house and movable house. And the houses will have different shapes of roof. जो छत होती है वो दो टाइप की है, एक है फ्लैट रूफ एंड द अदर वन इज द स्लोपिंग रूफ. फॉर टुडे दिस मच इज इनफ. योर वर्क, एज आई टेल यू in the last lessons also, that your work is to read the lesson and then watch my video. So I'll give you notes also. Till then children, just watch my video and try to read this lesson, understand it and take care. Okay.